हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट हैं देबाश्रिता मैम, जो आपको टिप्स देंगी कि आप मल्टीपल प्लेसमेंट्स कैसे ग्रैब कर सकते हो। एमबीए पे भी चर्चा होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, अपने बीच शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला आपने। और मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें। Thank you for inviting me. I'm really honored to be here. My name is Debashrita Panda. I've completed my MBA from NMIMS Mumbai in 2021. My majors was finance. And prior to that, I've completed my BTech in mechanical engineering from KIIT University. Currently, I work with Infosys Consulting as a management consultant. Prior to that, I've worked with companies like Accenture, Goldman Sachs, and Gitnars. And my hobbies include blogging, volunteering, and I love to help MBA aspirants who need help with the CV writing, SOP writing, or they need help with GDPR preparation. So yeah, that's a short introduction about me. तो इन मैम के इंट्रोडक्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना यार। ठीक है, तो मैम सबसे पहले तो आप अपनी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करिए, क्योंकि उससे पहले तो सबकी सेम होती है, स्कूल वही, कोचिंग, ट्यूशन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कॉलेज लाइफ पे आते हैं। तो कॉलेज लाइफ के बारे में अपना बताइए, आप जब से आपने स्टार्ट की होगी, जब से भी आपने स्टार्ट करी होगी जिस भी ईयर में, तब से लेके मतलब कैसी आपकी बीटेक लाइफ रही। और मेरे लिए तो पहली बार ऐसा कि College, कोई कोई लड़की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। okay, I'm a engineer हूँ, तो कॉलेज लाइफ तो सबकी सेम ही होती है, तुम भी इंजीनियर पता ही होगा. Huh, but yeah, being a girl and taking mechanical engineering is like when my professors have questioned me sometimes, like, why did you take mechanical? You should have taken CSI electronics. But I love mechanical is a core branch. It's known as a royal branch. Very proud to be a part of that fraternity. And I was a day scholar. तो मैं रोज घर से अप डाउन करती थी. मेरा कॉलेज मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर था. तो बहुत बार ना मास बंक होता था, क्योंकि मैकेनिकल सिविल वाले फेमस होते हैं मास बंक के लिए. तो बंक हो जाता था, बस नहीं होती थी, मैं घर नहीं आ पाती थी, तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी. मुझे रिसर्च वगैरह में बहुत शौक था, तो मैं रिसर्च पेपर वगैरह लिखने में फैकल्टी को का हेल्प करती थी. So that was something, and I started working on with NGOs when I was in BTech. So there was an NGO known as Rhythm of Nation. I joined in third year and I was working on the back-end operations for the NGO. तो कुछ भी उनका काम रहता था back-end. Suppose नुक्कड़ नाटक करना है railway station में. They needed some sort of letter from the railway people. So I used to go and manage all of that. I used to handle all of that. So that is my BTech life. I have not enjoyed जैसे लोग enjoy करते हैं hostel में रहना and all, क्योंकि मैं day scholar थी. But I'm glad I got the time to spend with my family. A lot of people don't get that. उनको बाहर रहना पड़ता है. So yeah, and regarding my MBA life, I was in hostel in NMIMS Bombay. So for 1 year I was in hostel. Then 2020 COVID happened and I had to come back. That was a memorable time because I had to manage everything alone in hostel. And classes भी रहती थी, काफी hectic होता है MBA, especially first trimester is very hectic. Assignments, case studies, then you have to prepare for internship. So yeah, it's been a wonderful journey. ओके, तो बेसिकली आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करी क्योंकि आपका इंटरेस्ट था, और ये एक मतलब आउट ऑफ द वे डिसीजन था, क्योंकि लोग कहते हैं लड़कियां मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करती हैं। तो एक्चुअली मतलब मेरा कैसे कॉइन मन किया था. कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरा मन था मैं डॉक्टर बनी. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, बट देन हुआ नहीं. तो देन आई वाज लाइक, अगर इंजीनियरिंग करना है तो कोर ब्रांच में जाऊंगी, एंड कोर में मैकेनिकल वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस. So I found it very fascinating. So that's how I took it. तो मैम जब आपने कॉलेज में एंट्री ली होगी, मींस जब भी आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई होगी, तो आपको पता था कि ये इंटर्नशिप, पीपीओ जैसे बड़े बड़े शब्द आपको सुनने में मिलेंगे आने वाले 1 2 3 सालों में। मतलब क्योंकि नहीं, जब हम मुझे कॉलेज में नहीं एंटर पता. करते हैं तो बेसिकली हम ट्वेल्थ के बाद ही आते हैं, या बहुत लोग हाँ. ड्रॉप लेने के बाद जाते हैं। तो हाँ. हम मुश्किल से 18 19 इसी एज ग्रुप में होते हैं। तो फिर वो हाँ. फेज आपका कैसा था, मतलब कब आपको पता चला कि पीपीओ, इंटर्नशिप, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ऑनेस्टली कुछ नहीं पता था. इवन एमबीए में भी आई वाज कंप्लीटली क्लूलेस. लाइक पीपल नो कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सी कंपनीज टारगेट करनी है, सब डिवीजन एंड ऑल. मुझे कुछ नहीं पता था, स्पेशली बीटेक में तो कुछ नहीं पता था.
आई जस्ट न्यू कि फोर्थ ईयर में कैंपस आएगा एंड मैकेनिकल के लिए ज्यादा कैंपस आते ही नहीं है क्योंकि मतलब कोर में कैंपस थोड़ा कम रहता है. हमें पता था यही मतलब मास रिक्रूटर्स आएंगे एंड दे टेक अस. तो वही था, बस उसी के लिए प्रिपेयर किया था. And during MBA, but we were more prepared. The entire batch was prepared. Like we have specific placement committees and all. They help us a lot to make sure that we are geared up for the placement season. They help us to get PPO. मतलब वो चाहते हैं कि आप अच्छा perform करें and convert करें offer. So MBA thing was completely different. But yeah, BTech में I had completely no clue about PPO, and hardly there were very few PPOs in college during my time. I am a 2017 batch person. ओके मैम, उसके बाद मतलब ये है कि फिर आपको इंटर्नशिप्स के बारे में लगभग बीटेक लाइफ में उतनी नॉलेज नहीं थी, ऐसे कुछ खासा। ओके, तो मैम अब आप एक्सपीरियंस से बता सकती हैं कि मतलब इंटर्नशिप्स किस किस डोमेन में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हमें जैसे पता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर इंजीनियरिंग है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स में यही जो कुछ गिने चुने नाम है, कोई ऐसी जो डोमेन जिसमें जैसे मतलब कि जो अभी तक उतनी हाइप नहीं है, जो थोड़ी नॉन टेक भी हो, इस टाइप की कुछ। Okay, I can talk about MBA divisions like operations, finance, marketing, data analytics है. तो suppose हम finance की बात करें तो आपका normal investment banking है, venture capital है, या फिर general retail banking, wholesale banking, those are the subdivisions you have. या फिर fintech में आप जा सकते हो. Fintech में you have मतलब data analytics भी आता है, operations भी आता है, finance भी आता है, a lot of things come together. Similarly, if you go for marketing, you have B2B sales, B2C sales. ठीक है, तो या फिर डायरेक्ट से लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम अप. बट इन during BTech, I think software में yeah, you have the maximum number of opportunities, and that depends on कौन सा language आप follow कर रहे हैं. Like a lot of things now, there is a lot of focus on Python and our AI related coding languages. पहले I think Java, I think is an evergreen language. A lot of people learn Java. I have personally worked on Oracle PeopleSoft in Accenture. So Oracle is also a very important thing. Oracle, SAP, Workday. So on databases, people work. Apart from that, I'm not sure. You are in CS, you might be knowing better. तो मैम फिर हम आते हैं आपकी एमबीए लाइफ पे। हम्म, तो आपको मतलब कब लगा कि एमबीए कर लेना चाहिए? क्या इंजीनियरिंग से खुशी नहीं मिली इतनी, या सेटिस्फैक्शन नहीं मिला? ये मैं बीटेक थर्ड ईयर से ही एमबीए का प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं मतलब आफ्टर वेंट इनटू मैकेनिकल आई रियलाइज की अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है ज्यादा कंट्री में, या फिर जितनी भी है बहुत स्ट्रगल है. एमटेक करना पड़ेगा, उसके बाद पीएचडी, पोस्ट डॉक, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है. या फिर एमएस करना वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी. So I realized the only way I can succeed is if I do an MBA. And my parents were like very very motivating कि मैं MBA करूँ. Like in a country where a lot of women don't get an opportunity to study, that to higher education बहुत कम है, इसमें I got an opportunity to do my master's. So that all those reasons I decided to that I wanted to go for an MBA. हम उसके बाद जब आप प्रिपेयर कर रहे थे एमबीए के लिए, तो कुछ चैलेंजेस आए होंगे, कुछ गलतियां आपने करी होंगी, तो वो कुछ अगर आप शेयर करना चाहें कि जो हमारी ऑडियंस अगर देख रही है वो गलतियां ना करे। बहुत गलतियां करी. आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, तो मैंने थोड़ा जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट किया. एंड the most important thing is give all exams. मतलब बहुत लोग होते हैं कि they're like बस कैट देंगे, बाकी एग्जाम नहीं देंगे. बहुत एग्जाम्स है इंडिया में, कैट, सैट, एनमैट, स्नैप टेस्ट, appear for everything. You never know what might backfire. So you have to keep your options open. जैसे हम लोग stock market में you don't keep all your eggs in one basket, right? So and this is also the same thing. आपको हर चीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो I gave a lot of importance to exams like TIS and NMAT. जब मुझे थोड़ा easy लगा, I felt कि based on my acumen, these exams were easier to crack because they demand speed and the questions are not that tough as are of CAT. So I felt I could clear these exams and I specifically focus on these exams. And even while I was working, I was preparing for MBA. So every day I used to wake up at 4 a.m. and by 4 to 7 I used to study. And then I used to go to office by 8:30. Bus mein jati thi, I used to read news articles to improve my reading. And I used to practice English vocab. Canteen में खा रही हूँ बैठ के I used to solve maths. मतलब जितना भी हो सकता था I used to
डू ऑल दिस सो दैट कभी टाइम वेस्ट ना, क्योंकि दिन भर हम 12-14 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद घर आके रात को इट इज लिटरली इम्पॉसिबल टू स्टडी टू क्वांट एंड ऑल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड वीकेंड पे कंप्लीटली प्रैक्टिस करना है, मॉक्स बहुत ज्यादा देती थी, क्योंकि एंड में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जो 10-12 मॉक दे दो, मॉक से ही आप देख लो कौन कौन सा आपको डाउट आ रहा है, वही चीज पढ़ के जाओ। दैट ऑल्सो हेल्प्स अलॉट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन ऑल्सो, व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ओडिशा जे। Odisha J used to happen during my time for state level colleges in Odisha government colleges. So उस time पे भी my mom used to say the same thing, that prepare from question papers, that helps a lot. Even if UPSC aspirants को पूछो, they will also do the same. कुछ नहीं आता तो question paper पढ़ के। So I think that is my motto, like keep on practicing till you get it. And you have to, that at one level you have to understand there might be some colleges you might not be able to crack. उसके लिए ज्यादा सोच के भी sad नहीं होना है. You have to just keep on giving your best, and you have to realize at one point if it is not happening, then you have to move on. So you have to understand when you have to work hard and when you have to move on. That is very important that people in our country do not realize. They keep on giving endless attempts. Just UPSC or especially that happens. So, Okay. तो मैम अदर देन आपके पेरेंट्स, जब आप पेरेंट्स ने सपोर्ट किया ही किया, वो तो आपने बता ही दिया कि काफ़ी सपोर्टिव था। जब आप क्लास में बैठ के अपना पढ़ रहे हो, खाना खाते वक्त अपना पढ़ रहे हो, तो आपका फ्रेंड सर्कल, आपके कॉलीग्स, उनका कैसा मतलब था कि उनका कैसा सपोर्ट रहा, कि वो सपोर्टिव थे या थोड़े टीजिंग थे? ऑफिस में तो नहीं बोलना होता इफ आई प्रिपेयरिंग, बिकॉज आप दे विल फील ना ऑफिस का काम हैम्पर हो रहा है बिकॉज आई स्टडी। बट माय रूममेट्स वर वेरी वेरी सपोर्टिव। आई यूज्ड टू लिव इन लाइक हम 3 लोग रहते थे एक रूम में। एंड मैं जब सुबह उठ के पढ़ती थी एंड ऑल, मतलब दे नेवर यूज्ड टू से कि डिस्टर्ब हो रहा है कुछ, दे वर वेरी सपोर्टिव। मैं जब रूम में होती थी पढ़ती थी, वो लोग रूम से निकल जाते थे, वो सब था। तो माय रूममेट्स वर वेरी वेरी सपोर्टिव एंड दे यूज्ड टू चीयर मी कि अगर कभी मॉक में कम नंबर आया एंड मैं उदास हो जाती, नहीं नहीं यार कुछ नहीं, गोलगप्पे खाने देते, ऐसा। That was a very good period actually. मैम ये वीडियो आप उनको भी शेयर करना, आपने उनकी थोड़ी सी तारीफ करी है, वो भी खुश हो जाएंगे। और उनको पता है मैं हमेशा उनकी तारीफ करती ओके। तो मैम सराउंडिंग की बात हो गई। हाँ, आपने कहा कि जब आपने 1 साल एमबीए में, मतलब 1 साल हो गया, उसके बाद कोविड आया। हाँ, तो क्लासेस वगैरह उस टाइम ही चल रही होंगी सेकेंड ईयर में भी आपके एमबीए के। हूँ। हाँ हाँ। तो जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में जब ऐसा हुआ, ऑफलाइन से हम ऑनलाइन आ गए एकदम से, तो उसमें क्या डिफरेंस रहा? क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े? क्या आपको लगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी हो गई, ये चीज़ खराब हो गई? ऑनलाइन में सबको मजा आता है कि एग्जाम देना आसान होता है, ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगी, यू गाइस नो इट बेटर। ऑफलाइन में आई थिंक लर्निंग वाज बेटर, क्योंकि हम क्लास जाते थे, वी हैड टू टेक दैट एफर्ट टू गो टू क्लास इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर एंड जो भी असाइनमेंट कुछ भी क्लास जाना है, फेस टू फेस 40 लोग बैठे उनके सामने प्रेजेंट करना था, दैट कॉन्फिडेंस यूज्ड टू कम ना। ऑनलाइन वो थोड़ा कम हो जाता है। अभी कैसा है ना कि मतलब स्क्रीन ऑफ करके मैं कुछ बोल रही हूँ, असाइनमेंट लिख रही हूँ, तो अभी मुझे रियल लाइफ में कोई बोलेगा जाके बोलो, मैं नहीं बोल, दैट इज डिफिकल्ट। तो अभी वो सब थोड़ा हो गया है ऑफलाइन। ऑनलाइन आई फील दैट इज द इशू। बट अदरवाइज आई थिंक ऑनलाइन फैसिलिटेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक कभी भी आप क्लास टाइमिंग्स रख सकते हो, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड 8 to 5 रखना है, बिल्डिंग में नहीं तो जगह नहीं है, ये सब एलिमिनेट हो जाता है। यू कैन स्टडी व्हेनेवर एंड वेरेवर यू वांट टू। Like my college, like NMIMS had given us Coursera का पूरा मतलब free subscription for 1 year, because हम लोग घर से थे। So I used that opportunity. I did a lot of courses that were relevant for the market. So maybe I am not sure अगर campus में होती तो if I would have got that or not, because तब COVID नहीं हुआ होता। So I think that was a very good thing. हाँ, but the cons is there were some labs that we missed out on. Like Bloomberg labs होता है finance वालों के लिए, तो we missed on that because we could not get those accesses at home. They're very expensive. There are pros and cons, but I think it would have been better if I would have gone to college and studied. Definitely. लर्निंग ज़्यादा बेटर होती है ऑफलाइन लेक्चर्स में, और एक जी डिसिप्लिन में बना होता है एक तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन में तो ठीक है, क्लास ही ज्वाइन करनी है, ऑन करके एग्जैक्टली, छोड़ आप दो। लॉग इन करके सो जाते हो, कुछ करते हो, पेरेंट्स यही बोलते इतना पैसा खर्चा किया तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, ये सब होता है ऑनलाइन। तो ये तो चीज़ें हैं। मैम आपने ग्रेजुएशन कौन से ईयर में करा है? बीटेक आई ग्रेजुएटेड इन 2017 एंड एमबीए इन 2021। 2017 एंड 2021। तो 17 तो काफ़ी पहला हो गया, उस समय तो लिंक्डइन इतना एक्टिव नहीं था, मतलब
लिंक्डइन शायद ही कोई जानता हो। 21 में थोड़ा हाँ था, लिंक्डइन लिंक्डइन है, मतलब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रोफेशनल का सोशल मीडिया बन चुका है लिंक्डइन। हाँ, अब तो काफ़ी ग्रोथ है उस पे भी। तो हाँ। अगर हम लिंक्डइन प्रोफाइल की ही बात करें तो कितनी इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, एक ग्रेजुएट के लिए, अगर आप इस पे थोड़ा सा डिफाइन कर पाए। The biggest thing on LinkedIn is you get to do a lot of networking. I cannot emphasize on this enough. मतलब मेरे लास्ट दो जॉब्स, इन्फोसिस का जॉब एंड किडनॉटसॉफ्ट, आई गॉट फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स हु वर ऑन लिंक्डइन. आई डिड नॉट नो देम पर्सनली. मतलब I just found them randomly on internet and they helped me out. They gave me referral and I got through the interviews. So it is very very important that you stay connected to the right people. You never know who will help you get a referral या फिर anything. जैसे कि आप मेरे साथ connect हुए, LinkedIn के थ्रू हुए ना, आपको कैसा पता चला मैं हूँ? We are not related. So it's very very important that everyone should have a LinkedIn account and they should maintain it. Like you should put your latest qualifications, achievements, if you're working, put everything, so that even if sometime a recruiter reaches out to you, they know exactly what they're looking for. No one's time is wasted because everything is put on the platform. I think abhi Insta, Facebook हटा के people should focus on LinkedIn because you need like even coding वगैरह का भी I see आते रहता है सब hacks, even MBA का भी बहुत सारा strategy वगैरह आते रहता है, तो दिन भर आप उसको पढ़ो ना, जब आप फ्री हो रहे हो आप उसको पढ़ो. Insta वगैरह पे instead of spending more time, you spend it on LinkedIn. I think it is more fruitful. You build a personal brand, people know you. ठीक है, and if you're posting good content and if you are doing good work, people respect you. I think that is very very important in today's world because today we are not able to meet each other. COVID की वजह से we are not able to go outside at all. So online ही सब कुछ हो रहा है. If you're able to build a personal brand, then that is amazing. I'm trying to do that. So LinkedIn is very very important. तो मैम लिंक्डइन प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक मतलब 18 से 30 एज ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समय। सोशल मीडिया पे अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो इससे आप लिंक्डइन पे कुछ सर्च कर लो, कुछ 30 देख के लो। ऊपर भी like people in their 50s have also reached out to me asking for reference. I'm not kidding. So जॉब एक ऐसी चीज है ना, पैसा एक ऐसा चीज है सबको चाहिए होता है, and LinkedIn is a very big platform to facilitate that. So definitely we all should be active on it. तो मैम अब लिंक्डइन प्रोफाइल की बात आई गई है तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैम जो एन मैट करके पेपर है, एमबीए वाला, उसके बारे में आप पहले थोड़ा बता दीजिए कि पेपर एक्चुअली में मतलब क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है इसका थोड़ा सा। और इसके बाद आप बता दीजिएगा कि मतलब कैसे आपने तैयारी करी, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी सीक्रेट शेयर हमारी ऑडियंस को हो जाए। तैयारी तैयारी वाली तो मैंने बता ही दी थी कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Even if you are an average student, but if you keep on practicing, you will definitely get it. ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा. ये आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, दिल लगा. ठीक है. एंड एनमैट इज फॉर एनएमएमएस. ठीक है, एनएमएमएस इज नर्सिंग होम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. तो इट हैज मल्टीपल ब्रांचेस इन बॉम्बे, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, शिवपुर कैंपसेस. तो उसके लिए यू नीड टू गिव एनमैट. दे डोंट टेक कैट या ज़ैट. तो उसके लिए स्पेसिफिक यू हैव टू गिव एनमैट. तो सबसे पहले यू हैव टू फिल एनमैट का फॉर्म. Then you have to go and fill individual colleges में आपको कहाँ पढ़ना है. तो suppose आप you want to go to NMMS मुंबई, तो आपको जाके fill करना होगा कि you want your score to be registered with NMMS मुंबई. जैसे symbiosis में होता है वैसे symbiosis का snap होता है माइक्रोन पे. तो उसमें भी ऐसा होता है, you have like there is an umbrella exam for 11-12 colleges in the university. उसके बाद जो भी कॉलेज में आपको जाना है या जो भी पर्टिकुलर कोर्स आपको करना है उसके लिए भी आपको सेपरेट पैसा देना होता है, ताकि दे if you get a good score, they register your score against that, and then you are called for interview and GP. So eligibility is like you should be a graduate. I 55%. I'm not sure all those details. You can check on the website. But yeah, that's it. You should be a graduate in all. You should have passed all your papers. There should be no backlog. And ऐसा कुछ criteria नहीं कि work ex होना चाहिए. India में you don't have that criteria for CAT. You need specific work ex. Without work ex, by being plain graduate, you can apply to any of the universities in the country. मैम तो आपके लिंक्डइन के बायो में 4 5 6 कंपनियां लिखी हुई थी लाइन से। मैं जब देख रहा था मैं कह रहा भाई साहब इतनी सारी कंपनीज, यहाँ एक नहीं लग रही, यहाँ मैम के पास 4 4 5 5 ऑफर्स हैं। तो अगर उस पर नहीं बात करें, open. मतलब वर्क एक्सपीरियंस है ऐसा कह सकते हैं।
हाँ, तो अगर हम उन पे वन बाय वन बात करें तो सबसे पहली थी इन्फोसिस में कंसल्टिंग वाली। तो मैम ये क्या मतलब, ये इस जॉब का रोल क्या होता है, आपको कैसे पता चला? काफी चीजें हैं मतलब, मेरे लिए तो ये इन्फोसिस कंसल्टिंग एक नया डोमेन ही है एक तरीके से। हाँ, तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ कंपनीज लाइक डेलॉयट, केपीएमजी, मैकिन्जी। ये सारी कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं। कंसल्टिंग मतलब बिजनेस का कुछ पर्टिकुलर इशू चल रहा है दैट बिजनेस इज नॉट एबल टू सॉल्व ऑन देयर ओन, और दे डोंट हैव द रिसोर्सेज टू डू दैट, दे हैव द मनी बट दे डोंट हैव द एक्सपर्टीज, so they outsource it to a third party, so we are the third party। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स इज एन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, but they need something, some help with their customer success or tool, so they are an investment bank, they will not get into marketing, that's not their job, so they will outsource this work to some other company, they might outsource this to Deloitte, say for example, so someone from Deloitte would go and understand the entire scenario, would capture the entire business model and try to understand kahan pe issue ho raha hai and how can we fix it and how can we build this model, so this is known as consulting। So consulting में you have multiple fields like strategy consulting, management consulting, and tech consulting. So companies like Accenture, Capgemini, even Infosys, they go for tech consulting. Okay, so tech consulting मतलब नॉर्मल आपका जो टेक्निकल जो प्रोजेक्ट चलता है जब जिसमें हम लोग जिसमें जाते हैं तो वो होता है टेक कंसल्टिंग, ठीक है। उसमें इंजीनियर्स, हम हमारे से इंजीनियर्स काम करते हैं, वी हैव सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हु ब्रिंग प्रोजेक्ट्स एंड दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो लॉजिक हमें समझाता है, हम उसको कोड करते हैं। Then you have management consulting जिसमें मैं, तो management consulting में you have to implement some processes that are coming from the business, the client you are dealing with. Sometimes you have to create a process, implement the process, या फिर sometimes you have to build something from scratch. Okay, and strategy consulting में you have to basically formulate an idea, जो आइडिया पहले ही नहीं है, मतलब क्लाइंट को भी नहीं पता, जस्ट नो कि ये प्रॉब्लम है। So when a strategy consultant goes, they have to see what the problem is, have to give a solution. But in management consulting, that might or might not happen. पहले से solution might be that they might not know how to implement. So this is what consulting is. Might be a bit confusing. I'm still learning what consulting is. But consulting is like it's like one of the most sought after careers after MBA. So I when I went into MBA, I was not sure what I wanted to do. So I went into Goldman Sachs. I got a PPO. Like, I was very excited that I got an opportunity to work with one of the biggest companies in the world. It's very, very prestigious. But then I realized that I really wanted to get into consulting or research advisory roles. So then I started preparing for consulting roles, and I kept on giving interviews till I cracked. So yeah. ये तो इन्फोसिस कंसल्टिंग हो गई। जो आपने एसेंचर में वर्क एक्सपीरियंस है आपका, उसके बारे में मतलब सेम में सब में कंसल्टिंग ही है या किसी में अलग अलग नहीं दोनों नहीं में नहीं अपने? नहीं नहीं, मैंने जितने भी कंपनीज वहां लिखे सब में काम अलग था, पूरा पूरा अलग काम था। Accenture was my first company. I will always cherish it. I made a lot of friends. I was a manual tester in Accenture. I worked in 3 projects. So I was a manual tester. My domain was Oracle PeopleSoft. So in 2 projects, I've done manual testing and automation testing. In one project, I was working on data mining. So testing जो होता था, उन लोगों को data set चाहिए रहता था. I used to pull those data sets for the testers to test. So that was my work in Accenture. It was just, I was an engineer. It was very very technical. ओके। तो हम आपकी नेक्स्ट कंपनी थी गिरनर सॉफ्ट, जो कि प्रोग्राम मैनेजर की थी, मतलब जो अच्छा, आपकी जॉब डोमेन थी। एक एक हाँ करके मतलब करना है मैम, क्या साथ? हाँ अगर ओके ओके। गिरनार सॉफ्ट, कार देखो डॉट कॉम पता है? कार देखो .com, हाँ। कार देखो डॉट कॉम का पेरेंट कंपनी है गिरनार सॉफ्ट। तो दे हैव कार देखो, बाइक देखो, इंश्योरेंस देखो, ट्रक देखो, ऑल दीज सिस्टर कंपनीज। सो उसमें कार देखो में आई वाज देयर एज प्रोग्राम मैनेजर B2B सेल्स के लिए। तो उसमें क्या होता है ना, B2B सेल्स में व्हाट वी यूज्ड टू डू, a lot of banks have these car loan ना, तो उनके लिए कस्टमर्स के लिए डिजिटल जर्नी क्रिएट करते थे हम, बैंक्स के कस्टमर्स के लिए, तो B2B सेल्स। तो उस दैट इनिशिएटिव आई वाज हेडिंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर इन कार्ड। अब गोल्डमैन का भी बता देते हैं सेपरेट में। गोल्डमैन सैक्स में आई वाज वर्किंग एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट।
So we have a lot of as I said before, Goldman Sachs mainly deals with investment banking. Investment banking is the main product of Goldman Sachs. So investment banking को पूरा करने के लिए जो जो भी services लगती है, ठीक है, there are a lot of services that are required, like you have to make presentations to pitch the clients, you need to translate some PPTs, you might have to send a copy of those PPTs to the client's hard copy. तो वो जितनी भी चीजें होती है ना, those things have some expense. तो उसका जितना भी budget आता था, my team used to manage all of that budget. So it was like, I don't want to disclose the numbers. The numbers were huge. So my team was responsible for managing the budget. It was basically a lot of work on financial accounting and analysis. So we used to do a lot of number crunching, forecasting. So that was my work. So all four companies have worked completely different. Nothing is related to nothing. So yeah. ये सवाल मेरा पूछने का जो मेन मोटो था वो यही था कि एक मैकेनिकल इंजीनियर क्या कुछ नहीं कर सकता अलग अलग डोमेन्स में भी। ये मुझे दिखाना था मेरी ऑडियंस को कि हाँ, अलग अलग डोमेन्स में भी काम किया जा सकता है, मतलब फील्ड्स हैं और भी। You have to accept. Matlab, a lot of my friends still are preparing for mechanical related exams. They are not able to accept up me till now ki, that domain is a bit difficult to get in, jobs come in. But I felt bad when I actually realized that I cannot get into core domain. I had a lot of dreams to be in the core sector. But then I realized that I need a job and uske upar bhi aspirations. So usko dekhte hi, matlab, I realized that I need to move on. I cannot get stuck with this. So I would just advise my young audience that please, if you are not able to clear one exam या फिर एक domain आपसे नहीं हो रहा, you can always move to another domain. Related allied चीजें बहुत होती है, market अभी बहुत अच्छा है. You can do anything that you want, but please don't get stuck in anything. Life is very short. हम कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स के बारे में बता सकते हैं आप, चाहे आपकी कॉलेज लाइफ का हो, चाहे आपकी इंटर्नशिप्स का हो, चाहे आपके करंट जॉब का हो, कुछ भी जो आपको लगे कि हाँ यार ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद मैं इस पोजीशन पे नहीं होती, या कुछ ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स टाइप। Life changing moment, I would say Infosys Consulting में to get management consultant role, I had to give nearly 100 plus interviews. So I think every day I was attending 2 or 3 interviews. ऐसा नहीं कि कंपनी अलग था, मे बी सेम कंपनी का 3-4 राउंड होता है. यू हैव टू मेक समटाइम्स प्रेजेंटेशंस, अटेंड क्वेश्चनर्स एंड ऑल. तो वो सब करके लाइक I think from September end, it was a very difficult moment for me because I was actively looking for consulting roles. So that has been definitely a life-changing moment for me because I feel I've personally grown as a better person. I've become more confident. I feel that I can do whatever I want to do. Like, there is still a fear that there are some things that I cannot do. There are people who are better than me. There are IIM people, ISB people, Harvard people, they're better. But abhi that thing has come ki, okay, even though we are not at their level, but we can try and work and be at their level. That confidence has come. So yeah, I think that's a life. तो मैम लास्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। आपको कोई ऐसी फ्यूचर एस्पिरेशन है कि हाँ यार आने वाले 5-6 साल या 4-5 जितने भी टाइम के बाद कुछ आपको करना है कि हाँ इस डोमेन में करना है या इस प्रोफाइल में करना है? इंटरव्यू में जैसे नहीं पूछते where do you see yourself in 5 years, वैसा वाला सवाल हो गया. अभी तो I'm very grateful I got an opportunity as a management consultant. I'm working in this. I'm very happy. So I want to continue in this sector. I want to visualize myself here. I want to work on management and strategy related projects. So that's there for now. I don't think I would like to switch my domain in the coming future. मैम कोई ऐसी स्पेसिफिक एडवाइस जो आप मेरी ऑडियंस को देना चाहेंगे, एक लास्ट फाइनल वाली कि यार कुछ हो ना हो ये चीज जरूर करना, इस टाइप की कुछ? ये बस वही है, work hard and yeah, hard work. People say smart work, but I believe hard work is important. I still believe hard work. Smart work शायद सब लोग नहीं कर सकते. सबके पास वो resources नहीं है smart work करने के लिए. And there are a lot of people घर से support नहीं मिलता या फिर they don't have conducive environments to study or work. And I would just like to say them, please keep on working hard. It's your dream. You have to fulfill it. And if you fail, there will be 1,000 people to throw stones at you. But if you succeed, then everyone will come to you. They will want to be a part of your life. Like I feel it right now. Like when like I've seen my transformation. Like
the number of people and the quality of people I used to hang out with during BTech vis-a-vis the number of people on LinkedIn I'm connected with now. That's very, very different. Because right now I'm at a different level. During BTech, I was at a different level. People used to perceive that level in a very different light. Now they perceive me in a different light. That does not mean these two sectors are bad or something. It's that the people perceive you the way that way, right? Like victory has 1,000 fathers, but defeat is an orphan. So I always keep this thing in my mind and I try to work. So I like people face a lot of criticism. You will face a lot of criticisms, but you have to keep going. तो इसके साथ ही मेरा इस सवालों का पिटारा खत्म हो चुका है। तो आप अपना एक्सपीरियंस और लाइक कमेंट शेयर के लिए मेरी ऑडियंस से अपील कर दीजिए, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। Please help Utkarsh get his number of likes and comments. Plus, I am in this video, so I would like I got a lot of likes and views on this video. So please like, comment, and subscribe to his channel. And Utkarsh, thank you so much for discovering me on LinkedIn and giving me an opportunity to talk to students. I really love talking to young people. I hope that I have been able to make some change in some minds of any particular student that who is watching this video. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। तो भाई अब तो मैम ने भी कह दिया है कि लाइक कमेंट कर देना, तो लाइक कमेंट करे बिना जाना नहीं, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। प्लस मैम का सोशल मीडिया हैंडल वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो मैम तक मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।